Hello students, how are you all? I hope you all are good. So let's see what we are going to learn today. And you must be wondering why I'm standing outside. So this chapter is actually based on the various changes that are happening around us. We are going to learn the things which actually happens around us. You might have experienced the changes day and night, evening, morning to morning, and many more changes. So what we call these changes? So in this chapter we are going to learn the various changes which are happening around us. It can be physical change, it can be chemical change, or it can be periodic change. So let's see one by one what are these changes. So children, here I have kept some of the examples of physical changes. Okay? What are physical changes? Physical changes are those changes in which we can change the shape, the size, but वो किस चीज से बना है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कभी नहीं बदलता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. आई हैव टेकन 2 balloons. Okay, first of all I have taken 2 balloons. Now this is a deflated one. ठीक है, अब let's do one thing, let's inflate one balloon. So children, in the first case what changes? Changes the shape of the balloon changes, yes or no? Shape of the balloon changes. What else changes? The size change. Okay, now let's take one more example. I have taken this piece of paper. ठीक है, अब this is क्या है? ये just a square piece of paper है. ठीक है, let's make some shape from this paper. Change, earlier it was a square paper, now this is a paper purse. So what changes? The shape. And what else changes? The size, yes or no? So in this case also shape and size changes. Okay, now let's take one more example. I have taken a carrot. If you have any of the vegetable you can take it, and let's start cutting the carrot. Okay, now see the shape of the carrot. It is short and they are circular, yes or no? So in this case also what has changed children? Shape and size. This can be reversed. Fine, जैसे suppose ये देखो, इसको मैंने खोला, again it becomes a paper, yes or no? So that can be reversed. इस balloon को अगर मैं open करूं, if I open my balloon, fine, so again it is like this only. Fine, so these changes can be reversed. अब कटिंग है, कटिंग हमने कर दी है, बट हम चाहें तो ये सबको इस तरह से ज्वाइन करके, if we join them like this and keep it like this, ये again एक शेप ले लेगा. Suppose I have taken this paper and I'll cut this paper. ठीक है, अब now can you see the shape changes? साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज होगा. हाउ कैन आई रिवर्स? आई रिवर्स द चेंज बाय स्टिकिंग दिस पेज और द पीस ऑफ पेपर अगेन विद दिस पेज. ओके, सो इन दिस वे these changes can be reversed back. So physical changes can be reversible. Yes or no? They can be reversible. Second thing, ठीक है, they can be reversed back. Thirdly, क्या है? ये टेम्परेरी होते हैं. टेम्परेरी. What is temporary? Temporary means होता है for a short period of time. They are temporary. Temporary means for a short period of time. अगर हम चाहें तो हम इसको काट के तुरंत इसे स्टिक भी कर सकते हैं. तो it is up to us. ये permanent नहीं होते. Cutting of paper, inflating a balloon, फोल्डिंग ऑफ अ प्लास्टिक. सपोज ये मेरे पास प्लास्टिक बर्ड है, देखो सी, ये दिस इज वन बर्ड. फाइन, ये मेरी पहले स्ट्रेट बर्ड थी. फाइन, नाउ आई हैव, दिस इज वन बर्ड, आई हैव फोल्डेड द बर्ड नाउ. सो शेप चेंजेस नाउ, एंड अगेन इफ आई कीप लाइक दिस, अगेन इट टर्न्स इनटू अ स्ट्रेट. सो इट कैन बी रिवर्स्ड, yes or no? It can be reversed to its own shape. Now take a rubber band, now try to stretch. See, क्या चेंज हुआ? The size changes. Again if I leave, it again come back to its place. So it is reversible. Yes or no? See, again it come back to its place. So it is reversible. Reverse हो गई.
थोड़ी देर के लिए थी, टेम्परेरी थी, ऐसा तो नहीं मैंने इसको ऐसा खींचा एंड इट रिमेन लाइक दिस, नो, फाइन, सो इट इज टेम्परेरी, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डो, जो कॉमनली आटा होता है, मम्मा गूंथती है, दिस इज डो प्रिपेयर्ड, और यू कैन टेक अ क्ले. See that the shape changes. Now this shape is oval shape. So this is a physical change. Fine. So physical changes are reversible and they are temporary. It is not permanent. If I remove it again, I will make, and again I will. So children, these all examples are physical changes. Now let's come to chemical changes. So in this, what I have taken vinegar, and I am going to add one more chemical powder, that is nothing but baking soda. See, reaction happens. Yes or no? Bubbles starts forming. So this is a chemical reaction which is happening. See, bubbles, all bubbles are forming. So one chemical reactions happen. So this is a chemical change. अब देखो, can it again converts into the vinegar? अब हम क्या इसे vinegar की तरह use कर सकते हैं? No, because a new chemical compound is formed here. So chemical change is that change in which a new compound is formed. Okay? Yes or no? ये क्या था मेरा? मैंने इसको लिया था, विनेगर था मेरे पास, और क्या मैंने इसमें ऐड किया? आई हैव एडेड बेकिंग सोडा. आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यू टेक विनेगर और आप इनो ले लीजिए इन प्लेस ऑफ बेकिंग सोडा. इफ यू हैव इनो, यू एड इन दैट, then you will find bubbles come out. The bubbles are basically nothing but a carbon dioxide gas comes out. So a new compound is formed. So chemical changes mein, this is the first example. Take another example. So what is this? I hope everybody knows. ये कुछ नहीं है बेटा. Yes, what is this? This is a tomato. Now can you see? This is a green tomato. Fine. ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन टोमेटो है. आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स राइपनिंग. ये थोड़ा सा ऐसे रेडिश होने लगेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स प्योर रेडिश टोमेटो आपका रेडी हो जाएगा. ये सो नो. सो कैन द रेडिश टोमेटो जो पूरा राइपन है अगेन कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन वन? कैन इट कन्वर्ट टू द ग्रीन वन? नो. नाउ दिस रेडिश टोमेटो is permanently formed. So chemical changes are permanent. They are permanent. Fine. And thirdly, what is there? A new compound is formed. A new substance is formed, or new compound is formed. Okay. So these are the three things which comes in chemical changes. Now let's see one more chemical change. So I have taken a piece of paper. आप सिर्फ इसे देखेंगे, आप इसे परफॉर्म नहीं करेंगे. Fine. So see, it start burning. Now the paper starts burning. See. तो क्या हुआ? दिस पेपर हैज बर्न. नाउ क्या मिला मुझे? एश. What I have got these ashes. Yes or no? Now can these ashes again convert into a paper? No. Now these ashes cannot convert into a paper. So that means this change, burning of paper, is a chemical change. It is permanent, and the new compound ashes or the new substance ashes form. This one is bachcho milk. This is milk. And this is curd. Fine. So milk to curd. Now you tell me, can we again convert the curd into milk? No. देखो कर्ड क्या हुआ? एक परमानेंट चेंज हो गया. परमानेंटली ये कर्ड रहेगा. ओके. सेकेंड, कर्ड what is a curd? Curd is a new substance which is formed from milk. ठीक. ये मीठा होता है दूध पीने में, है ना? इट इज जनरली स्वीट होता है. कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है इसमें. लैक्टोज. ओके. और ये कर्ड होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये हमें खट्टा लगता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. जो एसिड होते हैं जनरली वो खट्टे होते हैं, तो दही में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड. ओके.
So this lactic acid cannot convert into the lactose sugar. So this is again a chemical change. I hope it is clear to you. See, these are the eggs of pigeon. Now after some time, so it converts into a big pigeon. Can you see the pigeon? It converts into a big pigeon. Now this pigeon can again convert into an egg? No, it's not possible. Let's see one more change. I will show you. So this is, I have taken turmeric, normal haldi जो होती है वो है बेटा, और this is your washing powder. Washing powder या soap आप ले लो, ठीक है? Haldi powder is there. Okay. Now I'm going to add some. I'm going to add washing powder inside it. Let's see. See what is the change has come. Now the haldi which was of yellow color converts into red. So this is what happened. This is again a change happened. Okay, change has come now. Earlier it was yellow, now it is red in color, blood red. Blood भी इसी color का होता है ना. So this change has happened. See the color of haldi. So this is again a chemical change. Now this red color cannot convert into a yellow color haldi. Fine. So this type of change is again a chemical change which is irreversible, cannot be reversed, which is now permanent. ये permanent हो गया, and it is a new substance form. So this is again a chemical change. I hope children it is clear to you. After that, let's see one more change that is known as periodic change. So what is periodic change? Periodic change means which repeat after some time. Which repeat itself after a certain period of time. For example, जैसे अभी अगर evening का 5 o'clock हुआ है, ठीक है, तो कल फिर से evening का 5 o'clock होगा, again evening का 5 o'clock होगा. So periodic change is that change which repeat after a fixed interval of time. For example, if you take example of clock, then it is again after some time becomes 1 o'clock. So that means it has repeated after a fixed interval of time. For example, one more thing, like you can take your clock, you can take your watch. Second, if you say your human heart, see this one. Can you hear the sound? It is lub dub sounds is coming. So it can beat 72 times per minute. Fine? 72 times per minute. So it is like the rotation and the revolution of earth. See, the revolution of earth. It is continuously revolving around the sun. Fine? Rotation of the earth. क्या होता है rotation of the earth? That is day and night. Day and night. Day and night. So this is called repeated changes. So the changes which are repeated after a fixed interval of time, it is known as periodic change. So children, now there we have two words. One is called expansion. One is called contraction. Expansion means होता है बढ़ना, expand होना. Fine. Contraction means होता है घटना, पास आना. That is called expansion and contraction. The best example is water. अगर मैं water को कहूं, that is water, it's a liquid. Yes or no? Water liquid होता है ना? Water एक liquid होता है. अगर मैं इस water को heat दूं, if I give heat, तो क्या हो जाएंगे? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे जो पास ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब इनको हीट मिलेगी तो और दूर हो जाएंगे, और जब ये और दूर हो जाएंगे तो क्या होंगे? ये एक्सपैंड होंगे और ये बन जाएंगे वेपर. यस और नो? ये वेपर बन जाएंगे और ये उड़ जाएंगे. अगर इसी वाटर को, यहां मैंने क्या किया था, मैंने इसको हीट दी थी. अगर इस वाटर को इफ आई कीप इन रेफ्रिजरेटर, अगर मैं इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं या मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजर में रख दूं, तो सेम लिक्विड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा. मींस मॉलिक्यूल्स कम मोर क्लोजर, ऐसे पास आ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स कम मोर क्लोजर. मॉलिक्यूल्स कम मोर क्लोजर टू ईच अदर, इस तरह से पास आ जाएंगे और यही वाटर which was in a liquid state will form ice. Yes or no? So यहां देखो, जब हमने इस वाटर को हीट किया तो मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए और क्या बन गए? वेपर. और वेपर बन के उड़ गए. फाइन. और यही वाटर when we keep
एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, या हमने वाटर को कूल किया तो मॉलिक्यूल्स पास कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड व्हाट दे फॉर्म आइस. So this is known as expansion and this is known as contraction. Let's see this expansion and contraction with a simple example. In this experiment, we can see the metal bob can easily go inside the ring. But when we heat it, the metal expand, the molecules move far. So when the metal expand, now it cannot go inside. That means metal also expand on heating. तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टेकन अ बीकर. आप एक प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो. मैंने एक प्लास्टिक का बीकर लिया बेटा. उसके बाद में एक बॉटल लेके, एम्प्टी बॉटल, फाइन. एम्प्टी बॉटल के माउथ पे आप इस तरह से एक बलून लगा दीजिए. कीप योर बॉटल इन अ बिग कंटेनर. ठीक है, जैसे मैंने इसमें रखी. नाउ pour some warm water in the container. आप कंटेनर में warm water डालेंगे. Air. How the air has come? Because the air which was inside this beaker, the air बच्चों which was inside this beaker, जो इसके अंदर जो एयर थी बेटा, जब हमने उसे गर्म पानी में रखा तो वो एयर गर्म हो गई और इट एक्सपैंड. नाउ इट इज फिल्ड, एक्सपैंड हुई एंड दैट इज फिल्ड इन द बलून, और बलून हमारा इन्फ्लेट हो गया. नाउ द सेम बलून अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ठंडे पानी में रखते हैं. ओके, सो लेट्स टेक अनदर बोल कोल्ड वाटर. अब हमने जब इसको कोल्ड वाटर में रखा, जैसे ही आफ्टर सम टाइम अगेन जो एयर थी वो क्या हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई. अगेन जो है एयर जो है वो ठंडी हो गई एंड इट इज नाउ अगेन गॉन डाउन इन द beaker. So in this way children, we can see that when we keep in a hot water, this blows. See, it blows. Whereas when we keep the balloon in a normal cold water, nothing happens. That means in a hot water, the air which is present inside the beaker के अंदर जो air है वो expand होती है and it comes up. Okay, so this is an example of expansion and this is an example of contraction. I hope you understood the topic well and thank you so much for watching.